Hello everyone, I am Sapna and today's topic is Computer System, Chapter 1 of 11th class RBSC. In this chapter, Introduction to Computer System, Evolution of Computer, Computer Memory and Software, we will read about this. So first is Introduction to Computer System. A computer is an electronic device that can be programmed to accept data, process it and generate result output. A computer is an electronic device in which we can input the data and it processes, after that it gives output as a result. A computer along with the additional hardware and software together is called computer system. A computer system primarily comprises of a central processing unit, memory, input-output devices and storage devices. All these components functions together as a single unit of deliver the desired output. ये सभी चीज़ें मिलके एक हमको desired output देती हैं. और कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म एंड साइज, बहुत सारे साइजेस में और फॉर्म्स में आता है. फ्रॉम ए हाई एंड सर्वर टू ए पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, tablet computer or smartphones. In figure there is a block diagram of the CPU. So we will see here there is a block diagram of CPU. Okay, the CPU inside divided in three parts: memory, control unit and ALU, arithmetic and logical unit. So आगे देखते हैं मेमोरी. नाउ अब देखते हैं हम लोग कि यूज़र कैन इनपुट data. Okay, the data processed in the CPU and after that it gives the output. So this is the block diagram of CPU. Central processing unit, it is an electronic device circuitry of the computer that carries out the actual processing and it is usually referred to the brain of the computer. CPU is considered as the brain of the computer. It performs all type of data processing operations. It stores data, intermediate results and instructions. Control unit is क्या है वो, it decodes the instructions and controls all the other internal component of the CPU to make it work. It is also commonly called processor. Also, physically, a CPU can be placed on one or more microchips called integrated circuits. The ICs comprises semiconductor material. क्या होता है semiconductor material? Computer chips both for CPU and memory are composed of semiconductor material. Semiconductor make it possible to miniaturize electronic components. Miniaturize means not only the component take up the less space, it also means that they are faster and require less energy. Okay, आगे देखें. The CPU is given instruction and data through programs. The CPU then fetches the program and data from the memory and perform arithmetic and logical operations. CPU में जो instructions और data दी जाती हैं वो CPU क्या करता है, उन प्रोग्राम और डेटा को मेमोरी से लाता है और arithmetic and logical operations परफॉर्म करता है. ये स्टोर भी करता है हमारे रिज़ल्ट को, उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको स्टोर करता है. While processing, the CPU stores the data as well as instructions in its local memory called register. Underline कि प्रोसेसिंग के टाइम CPU जो स्टोर्स करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस इन लोकल मेमोरी इज कॉल्ड रजिस्टर. Registers are the part of the CPU chip and they are limited in size and numbers. Different registers are for storing data, instructions or intermediate results. Other than the registers, the CPU has two main components, ALU and CU. ALU performs all the arithmetic logical units and control unit controls all the functions of the computer.
CPU controls sequential instructions, execution, interrupts instructions and guides data flow through the computer's memory. ALU and input or output devices. CPU is also popularly known as a microprocessor. Now, input device. Before we know what is the input device, first we should know what is hardware and software. Hardware, the things we can touch is called hardware. Okay, and the things that we cannot touch is software. So we can say the hardware is all the component of the computer are hardware, inside or outside, but the data, instructions and programs are called software. Same hard copy and soft copy. After the printing on the paper, we can touch the paper, so this is hard copy. And we can see only the monitor, all the programs and results and software data instructions, so this is called soft copy. Okay. Now what is the computer cycle? What is the computer cycle? Computer cycle is first input data. First input data. The second is convert human language into machine language. Third, processing. Fourth, convert machine language into human language. And the fifth is result. Fifth is result. Okay. So first input data. First user input the data. After that, computer cannot understand the human language, so it converts it in a machine language. After that, processing. After the processing, computer convert the machine language into human language because we cannot understand machine language. And fifth one is result. This is the complete cycle. Now, input device. The device through which control signals are sent to a computer are termed as an input device. These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system. Some examples of the input devices include keyboard, mouse, scanner, touchscreen, etc. Keyboard is the most common used input device. These are the input devices. This is the figure. And now, Braille keyboards are also available to help the visually impaired for entering data into the computer. Besides, we can now enter the data through voice. So, what is Braille keyboard? Braille keyboard जो है वो क्या करता है कि this feature will make its operating system more accessible for people who are visually impaired without requiring extra hardware. ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर के वो क्या दिखा देता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को और फ्लेक्सिबल बनाता है, और हम जो लोग देख नहीं सकते या कम देखते हैं उन लोगों के लिए ये फीचर बहुत इम्पॉर्टेंट है. We can use Google Voice Search to search the web where we can input the search string through our voice. अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम लोग इनपुट करने के लिए हम सिर्फ बोल सकते हैं तो भी हमारी जो डेटा है वो इनपुट हो सकता है. जैसे कि हम गूगल वॉइस पे कुछ सर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीकर ऑन करके बोल देते हैं और हमारी जो चीज़ सर्च करनी होती है वो हमको मिल जाती है. Data entered through input devices temporarily stored in a main memory, also called RAM, of the computer system. For permanent storage and future use, the data as well as instructions are stored permanently in additional storage location called secondary memory. So, RAM. What is RAM? RAM is a random access memory. Random access memory. And ROM is a read-only memory. So, only we should know what is the main difference in between them. RAM is responsible for speed and ROM is responsible for storage. ठीक है. अभी हम कभी कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हैं तो हमको बताता है कि आपके 40 GB 80 GB 90 जो भी अब तो बहुत ज़्यादा हो गया,
आपकी रोम है तो आप लोग उसको ले लेते हो बड़ी खुश हो गए कि हाँ बहुत अच्छा कंप्यूटर है, बट आपने रैम पे कभी ध्यान नहीं देते। तो रैम क्या है करती है कि अगर रैम आप कम होगी आपकी, तो उससे क्या होगा कि आप अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस आपने फटाफट ओपन कर ली, अब आप काम कर रहे हो, तो वो क्या होगी आपकी वर्क जो है उसकी स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलेगी ना मूव होने के लिए सारी एप्लीकेशंस को। तो एक एक करके वन बाय वन होंगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड अगर अच्छी रखनी है तो हमें रैम भी अच्छी होनी चाहिए। तो रैम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड एंड रोम इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द storage. Now next one is output device. The device that receive data from a computer system for display, physical production, etc. is a called output device. It converts digital information into human understandable form. For example, monitor, projector, headphone, speaker, printer, plotter, etc. Some output devices are shown in here. Some कुछ यहाँ पे show कर रखी हैं इन्होंने. After that, Braille display monitor is useful for the visually challenged person to understand the textual output generated by the computer. A printer is the most commonly used device to get output in physically hard copy. Physical जो अपनी बताया था मैंने अभी आपको. There are 3 types of the printers used: inkjet, laser and dot matrix. Nowadays there is a हम लोग वैसे अब सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है? लेज़र. Nowadays there is a new type of printer called 3D printer which is used to build physical replica. उस एक physical replica means उसकी copy of a digital 3D design की. And these printers are being used in manufacturing industries to create prototypes of products. This usage is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs. Now, evolution of computer. From a simple calculator to a modern day powerful data processor, computing device have evolved in a relatively short span of time. The evolution of computing device is shown in a timeline. देखें, इनपुट एंड दिस इज़ क्या है आपका आउटपुट एंड CPU. फिगर कौन सा इसका देखते हैं, ये रहा. कैसे हुआ आपका, देखो स्टार्टिंग 500 बिफोर क्राइस्ट. पहले कौन सा आया था? एबेकस. कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूट टू द इन्वेंशन ऑफ द एबेकस almost 3000 years ago. It was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculations only. After that, 1642, Blaise Pascal invented a mechanical calculator known as Pascal calculator or Pascaline to do addition and subtraction of two numbers directly and multiplications and division through repeated addition or subtraction. Now third, 1834, analytical engine. Charles Babbage invented analytical engine, a mechanical computing device for inputting, processing, storing and displaying the output, which is considered to form a basis of modern computers. Very easy language, सब समझ आ रहा हो easily. Now next one is 1819, tabulating machine. Herman Hollerith designed a tabulating machine for the summarizing the data stored on the punched card. It is considered to be the first step towards programming. First 500, then 1642, then 1834, then 1819 and 1937. Execute the program stored in a card, punched card. Okay, it is considered to be the first step towards programming. Okay, तो punched card क्या होते हैं? Punched card is a piece of stiff paper that can be used to certain digital data represented by the presence or absence of holes in
predefined position. Okay. A punch card reader is a computer input device used to read computer program in either source or executable form and data form from punch card. A punch card is an output device that punches holes in the card. It is input and output both. Okay. आगे देखते हैं। मतलब आपके 1890 में जो है आपके प्रोग्रामिंग की तरफ हम बढ़ने लगे थे। टर्निंग machines. The turning machines concept was general purpose programmable machine that was capable to solve any problem by executing the program stored on the punch cards. Okay. Now 1945. जॉन आपका ये अब आ गया 1945 में। एक बार देखते हैं। हाँ, जॉन वॉन नॉयमन इंट्रोड्यूस्ड the concept of the stored program computer which was capable of storing data as well as program in the memory. The EDVAC and then ENIAC computers were developed based on this concept. ठीक, तो अब क्या है ये जॉन वॉन नॉयमन is the design upon which many general purpose computer are based. Okay, and it is based on a 1945 description by Hungarian American mathematician. आगे देखते हैं integrated circuit. An integrated circuit is a silicon chip 1970 which contains entire electronic circuit on a very small area. The size of computer has drastically बहुत अधिक reduce हो गए थे because of ICs. क्या था कि एक टाइम तो ऐसा था कि हमारे कंप्यूटर्स इतने बड़े थे, एक रूम के जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। ठीक है ना। और कहाँ आईसीज के बाद हमारे बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, फिनिश्ड। आगे पढ़ते हैं। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर अभी बताया आपको मैंने। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट for processing arithmetic and logical instruction, a memory to store data and programs, input and output devices, and communication channels to send and receive the output data. ENIAC means electronic numerical integrator and computer, underline कर लो, is the first binary programmable computer based on von Neumann architecture. In 1970s, large-scale integration LSI of electronic circuit allowed integration of integration of complete CPU on a single chip called microprocessor. Moore's law predicted exponential growth in number of transistors that could be assembled in a single microchip. In 1980s, the processing power of computers increased exponentially by integrating around 3 million components on a small size chip, termed as very large scale integration VLSI. Further advancement in technology has made it feasible to fabricate high density of transistor and other components on a single IC called super large scale integration as shown in figure 1.6. So what was it कि during 1970, ठीक है ना, LSI large scale integrated ना, एक चिप पूरे CPU के आपके जो पूरे CPU था उसके इंटीग्रेशन के लिए अलाउ किया गया था उसको, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। फिर मूर के लॉ ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि एक ही माइक्रोचिप में कलेक्ट किए जाने वाले नंबर ऑफ द ट्रांजिस्टर में तेज़ी से ग्रोथ होगी, उसने ये बताया था। तो क्या हुआ कि 1980 प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज़ हो गई। मीन्स एक स्मॉल साइज चिप में अराउंड 3 मिलियन आपके 3 मिलियन कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया गया, जिसे कहा क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है ना, VLSI। इस टेक्नोलॉजी ने ट्रांजिस्टर और अदर कंपोनेंट को की हाई डेंसिटी को एक ही आईसी पर बनाना पॉसिबल कर दिया, जिसे क्या कहा, SLA।
SI कहा गया। ठीक है। IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम यूज़र इन 1981। इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट होम यूज़र के लिए PC IBM ने 81 में। और मैकिनतोश कब हुआ था? एप्पल इंट्रोड्यूस दिस मशीन इन 1984। द पॉपुलरिटी ऑफ PC सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सर्च मीन्स बढ़ गई, बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ गई। किस लिए? किसका इंट्रोडक्शन हुआ? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। पहले क्या था? CUI तक, कमांड यूज़र इंटरफेस। अब क्या है अपने को? पहले क्या होता था? एवरी कमांड वी हैव टू, हमको लर्न होने चाहिए थे, याद होने चाहिए, तभी हम उस कमांड को लिख सकते थे। जैसे डिलीट के लिए DEL किया, रीनेम के लिए REN किया। अगर हमको कोई फोल्डर बनाना है तो हम क्या करते थे? DIR कमांड लेते थे। ठीक है। CD लिखते थे चेंज के लिए, RD रिमूव के लिए। तो ये सब कमांड हमें याद होने चाहिए थे। अब क्या है कि GUI हो गया, तो अब कुछ भी नहीं। आप तो क्या करते हैं? विंडोज़ में जाके किसी भी जिसको भी डिलीट करना, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट पे जाके डिलीट कर दिया। तो ये क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और वो हमारा पहले क्या था? कमांड यूज़र इंटरफेस। ओके। नाउ आगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।